हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम इरदोव जनरल फिजिक्स की प्रॉब्लम 1.81 को डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रिज्म 1 ऑफ मास कैपिटल M एंड विथ एंगल अल्फा rests on a horizontal surface. Bar 2 of mass small m is placed on the prism. Assuming the friction to be negligible, find the acceleration of the prism. इस प्रॉब्लम को हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम और एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर के फ्रेम दोनों फ्रेम्स में डिस्कस करेंगे और इक्वेशंस को हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है फिजिक्स के कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रॉब्लम में दो ब्लॉक्स हैं, स्मॉल m अपर ब्लॉक, कैपिटल M लोअर ब्लॉक। जैसे अपर ब्लॉक स्लाइड करता है, एक्सीलरेट होता है डाउनवर्ड्स, लोअर ब्लॉक कैपिटल M राइट हैंड साइड में एक्सीलरेट होता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमको लोअर ब्लॉक कैपिटल M का एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। फोर्सेस हम इसमें स्केच करते हैं। दिस इज द लोअर ब्लॉक कैपिटल M, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, this is the normal reaction in upper block capital N, and this is the weight small mg, and this is the acceleration of the right hand side में small a acceleration of the lower block. Now this block capital M is accelerated towards right, so this acceleration is due to certain force. द नॉर्मल रिएक्शन n का जो कंपोनेंट है n साइन अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस n साइन अल्फा force will provide this acceleration A. So first equation we can write n sin alpha is equal to m mass into acceleration. This is the first equation. Now we will discuss an important point here. This acceleration A has a component perpendicular to the wedge A sin alpha. This is alpha, this is A. So A sin alpha is the acceleration perpendicular to the wedge. Now we see smaller block here. For this block and this block to remain in contact, acceleration of this block in the normal direction and acceleration of this block in the normal direction should be same. So this is A sin alpha normal, so this block should also be A sin alpha, and so this A sin alpha is the acceleration of this block. So mg cos alpha is the component of this mass mg, alpha is this angle. So mg cos alpha minus n, this is the resultant force downwards, so this must be equal to mass into this acceleration. So this is the equation number 2 here. Mg cos alpha minus n is equal to m into A sin alpha. The point is here, acceleration of perpendicular to this wedge, they should be same, because initially at time t is equal to 0, both blocks are at rest, and if it is moving downwards and it is moving right in the horizontal direction, this block, small m block, is have a acceleration component along the wedge and an acceleration component perpendicular to the wedge. So there are two accelerations here, one along the wedge and one perpendicular to wedge. So there are two equations here,
n sin alpha is equal to m into a, and mg cos alpha minus n is equal to m into a sin alpha. So we solve these equations, equation 1 and 2, we get acceleration a of this. Now from the point of view of accelerated frame, if the observer is on this accelerated block, capital M, then equation 1 is same, because n is the normal reaction. The component of n provides the acceleration. So n sin alpha is equal to mass into acceleration of this block, capital M. But for the observer here on the accelerated frame, we can apply a pseudo force on this small block, m into a. In the opposite direction, a is the acceleration of this block in this direction, so pseudo force will be in this direction, m into a. And this is the normal reaction n, and this is the mg cos alpha, is the component of the weight of this block. So for this observer, there is only one acceleration along the wedge. There is no normal acceleration. So net upward force must be equal to net downward force. So ma का component एक होगा along the n, ma sin alpha plus n must be equal to mg cos alpha. So mg cos alpha is equal to n plus ma sin alpha is equal to mg cos alpha. Net upward force is equal to net downward force, because this block has no normal acceleration, normal to the wedge acceleration. There is no such acceleration. Only for this observer, only there is acceleration along the wedge. So these are two equations. In this case, for the observer on the accelerated frame, if you solve these two, we get the A. Both the results are the same. Whether you solve this problem in ground observer frame or you solve it in accelerated frame. Now there are important points to be discussed here. If you see acceleration A, this acceleration A depends on acceleration of mass of this block also, capital M also, or n, we can find out the value of n also. इसमें block ground observer के frame में block has two acceleration, along the wedge and normal to the wedge. But accelerated frame observer frame में block has only one acceleration along the wedge. This is the important point to be remembered. Now if we solve these two equations in maxima command, we write the equations in maxima command here. Equation 1 colon n sin alpha is equal to m into a dollar. Equation 2 colon mg cos alpha minus n is equal to ma sin alpha, dollar sign here. And solve command is used for the maxima. Solve स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कॉमा जो वेरिएबल्स हमें निकालने हैं एक्सेलरेशन एंड कैपिटल एन नॉर्मल रिएक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे और सेमी कोलन, उसके बाद शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व होकर के हमें एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ जाएगी, एम जी कॉस अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाई एम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल एम, विच इज़ द सेम वैल्यू जो कि हमने पहले निकाली है इक्वेशन सॉल्व करके। यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि इक्वेशन कैसे मैक्सिमा कमांड में केवल फ्यू कमांड्स यूज़ करके हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर यूज़ करके। और इसमें हम देखेंगे अगर हम यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन भी निकाला गया है, आप यहाँ देखिए अगर m जो है इनफाइनाइट हो जाए तो दिस m एंड दिस m कैंसल्स आउट, सो व्हाट इज लेफ्ट mg cos alpha. So normal reaction in that case will be mg cos alpha. So due to acceleration of this wedge, normal reaction is also affected, and this is the acceleration of the capital M block, lower block. So
अब इस इक्वेशंस को अगर हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तो इक्वेशन 1 लिख दिया, इक्वेशन 2 कोलन में लिख दिया और सॉल्व कमांड दिया, और उसके बाद हमने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये आंसर आ गया आपका। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमने मैक्सिमा सॉफ्टवेयर यूज़ करके इस प्रॉब्लम को किया है। और आई थिंक दैट दिस वीडियो will be useful. Thank you.